Factors influencing climate, they are number 1 latitude, number 2 altitude, and like that there are major 6 factors which influence the climate of any place. First, let us discuss latitude. The spelling is error over there. Okay, so let's rectify yourself. LATITUDE it should be. Okay, so first let me tell you how latitude influence the climate of a place. That means with the change of latitude, climate changes. Latitude influence the climate means here with the change of latitude, climate of a place changes. Let me tell you or explain you how. This is 0 degree latitude. Okay, 0 degree latitude. Here this place receive the direct sunlight, so direct rays of the sun. So if this place receive direct rays of the sun, then definitely this place receive the maximum heat from the sun. Average heat this place receive maximum from the sun. Okay, so definitely this place will be the highest temperature. If here will be the highest temperature, here will be the highest rainfall also. That is why the equatorial area we find rainfall almost every day. Okay, now this region or the equatorial area also called 0 degree latitude. This is 0 degree latitude. Okay, now we are changing the latitude. Suppose this is 30 degree, 60 degree and 90 degree latitude. That means the polar region. When we go to the polar region, there will be the freezing. That means the temperature will be the lowest. That means with the change of latitude, temperature is changing. That means here the highest temperature, and when we go towards the north, that means towards the pole, north pole or the south pole, whatever it might be. Okay, temperature starts decreasing. Why temperature starts decreasing? Reason is that here this area receive the direct rays of the sun, but these places cannot receive the direct rays of the sun, but these places receive slanting rays of the sun. That means थोड़ा सा तिरछा ये सन का रेस यहाँ पर फॉल होता है, जिसके चलते यहाँ पर सन का जो हीट रिसीव जो करते हैं या तो सन का रेस फॉल होते कम मात्रा में होता है. ओके, इसीलिए यहाँ पर लैटिट्यूड चेंज होने से टेम्परेचर में यहाँ डिफरेंस आ रहा है. कहने का मतलब कि लैटिट्यूड का चेंज से यहाँ पर क्लाइमेट में इन्फ्लुएंस है. लैटिट्यूड चेंज, टेम्परेचर चेंज, दैट मीन्स लैटिट्यूड का इन्फ्लुएंस क्लाइमेट में है. और नंबर 2 है आपका यहाँ पर ऑल्टीट्यूड. विद द चेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड, climate also changes. So what is altitude? Altitude means here height of a place from the sea level. That means sea level से उस जगह का height कितना है, इसी को altitude कहते. And first sea level, what is sea level? You have to understand this also. Sea level or the seas or the ocean, all the oceans of the world, they are interconnected. So if all the oceans are connected, you know that if you fill, you take 2 bottles. Okay, you take 2 bottles and you fill water in one bottle. Half you fill water and another bottle you fill water the full bottle. Okay, now what you do, you connect the 2 bottles with a pipe from the middle. Now one bottle is filled with water, half only. Another bottle is there which is full. Okay, now if you connect the pipe in between these 2 bottles, that means if you connect these 2 bottles with a pipe, then water from the glass which is full of water will start moving towards the glass which is half full. Okay, that means एक ग्लास में पूरा आपने एक ग्लास या तो पानी मान के चलो कि एक आपने बोतल में पूरा पानी भर दिए, एक में आधा ही भरे.
अब दोनों को बीच से एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे, दो ग्लास को। तो जिसमें ज़्यादा पानी है, ठीक है ना, जिस ग्लास में, और जिसमें कम है, तो जिसमें ज़्यादा है उससे पानी फ्लो करना शुरू करेगा, जिसमें कम है, ठीक है। और जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं होगा तब तक फ्लो करेगा, है कि नहीं। और एट द लास्ट द level of both the two glasses water will be the same, isn't it? That means if all the oceans of the world they are connected, then definitely their level is same. Okay, if their level is same, now the point to be noted, that is the with the change of altitude, the climate of a place also changes. Now what is altitude? Altitude means height of a place from the sea level. सी लेवल से कितना हाइट में है कोई भी जगह, इसी को कहते हैं ऑल्टीट्यूड। ओके, नाउ विद द चेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट चेंजेस। ओके, फॉर एग्जांपल इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओके, we find maximum heat, and when we go to Jammu Kashmir, there the temperature will be very low in comparison of Delhi and Uttar Pradesh and Bihar and other states, because the height of Jammu Kashmir from the sea level is greater than that of the height of Delhi, Uttar Pradesh and Bihar. Okay, and similarly if you go to Mount Everest, it is almost full of the snow. That means with the increase of the height, here temperature is decreasing. Okay, that means if with the increase of the height temperature decreases, then definitely we can say that altitude influence the climate. Okay, now third one is the distance from the sea. Distance from the sea, if a place is far away from the sea, then definitely there the temperature is also extreme, and if a place is nearby the sea, there the temperature also is the chances to be moderate. For example, Mumbai, okay, it's nearby the sea, Arabian Sea. So if it is nearby the water body, or if it is nearby the sea, then definitely during daytime, when the land of Mumbai gets heated extremely, when the land of Mumbai during daytime gets heated extremely, and when the land gets heated extremely, then there will be low pressure. Okay, there will be low pressure. That means the air of that place becomes more hot, and when the air becomes more hot, it becomes light, and when it becomes very light, that means halka hoga, when it becomes very light, it starts rising up. Okay, and when it starts rising up, that place will be the vacant. But if nothing is there, what will be there? Air. That means now if the hot air of the Mumbai land rose up due to the excessive heat during daytime, then air has to come over there to fill that place. And nearby Mumbai there is the ocean, there is the sea. Okay, Arabian Sea is already there. So from the Arabian Sea area, that time air comes to fill the Mumbai land, okay, from where hot air already rose up. Okay, now the air which comes from the Arabian Sea to fill the gap over there, the air which came from the Arabian Sea, that means via the water or the sea surface, that air is definitely cold. If that air is definitely cold, then that air which come from the sea also makes Mumbai cold. That means though there might be very hot, okay, but also the wind that comes from the ocean or the sea makes that place moderate, not extreme hot. But in comparison of that, when you talk about Uttar Pradesh, Delhi and the Bihar,
suppose Delhi, okay, or Uttar Pradesh or Bihar, suppose Bihar, okay. Bihar, nearby we don't have the sea, so in that case what happens during the summertime, the Bihar, land of Bihar receive maximum heat from the sunlight, and when maximum heat is received by the land of Bihar during the summertime, then lands get heated, then air above the land also gets heated. When the air gets heated, air becomes light and starts rising up and rises up, ऊपर की तरफ चला जाएगा. Now what happens to fill this gap? Hot air became hot and rose up. Now here is vacant, so to fill this gap, air has to come from somewhere, and from where air will come? Okay, from Uttar Pradesh, from Jharkhand, nearby the air has to come, and Uttar Pradesh also already there is the hot air will come from there, Uttar Pradesh and the Jharkhand. So in summer we feel here extreme hot, but in when we talk about Mumbai, there is not the extreme hot. Why? Because the land of Mumbai, when gets heated, same amount of heat Mumbai also receive during summer, like that of Bihar and the Uttar Pradesh. But what happens when the hot air rises from the Mumbai area? Now when hot air rises, now that land of Mumbai, which is now vacant because hot air rises up, no, or rose up. Now to fill that gap, air came from the Arabian Sea and filled that gap, and the air there which came from the Arabian Sea, that was cold, or that is cold. Why cold? Because that came through the water only, and we know that water gets heated very slowly. So what happens? The area which is nearby the ocean or the sea, there the temperature is almost moderate, not the extreme one. That means distance from the sea also influence the climate. If a place is nearby the sea, then there is the chances of the climate to be moderate, and if a place is away from the sea, in that case there is the chances of the temperature being extreme or the climate being extreme. Understood? Now another one, fourth one, wind and pressure. Wind and pressure means here wind also influence the climate of any place. For example, India, in India, monsoon wind brings rainfall. Monsoon is nothing other than the wind. Okay, monsoon is already the wind. So if monsoon is wind, in India what happens during the monsoon time? Okay, during the monsoon time, here this is India, okay, it is India, and in India rainfall is brought by the monsoon wind only. That means wind which come via the Indian Ocean, okay, or from the Indian Ocean generally, okay, that brings rainfall here in India. That means wind brings rainfall, or wind helps to bring the rainfall. That means wind also influence the climate. And it also happens that during monsoon, wherever the monsoon wind moves or blows, there will be rainfall, and wherever the monsoon wind doesn't blow, there won't be any rainfall. That means rainfall area depends on the direction of the monsoon wind, where the moisture bearing, जिसमें आपका नमी होगा जिस विंड में, वो विंड किस तरफ ब्लो कर रहा है, वहाँ पर बारिश होगा. जहाँ ब्लो नहीं कर रहा है मॉइस्चर बियरिंग विंड, वहाँ बारिश नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ विंड का रोल है यहाँ किसी भी एरिया में बारिश कराने में भी. एंड एट द सेम टाइम प्रेशर ऑल्सो हैज़ द इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले to the climate of any place. Suppose for example of Rajasthan, okay, Rajasthan area during the month of May, June, July, okay, there will be extreme hot. And why extreme hot? Because of the presence of sand, desert area, right? So if Rajasthan area is the desert area, there will be extreme hot. If there will be extreme hot, there will be the lowest pressure. If the pressure is lowest in Rajasthan, in that case what happens? That is the main center of attraction
for the monsoon wind. If there is the lowest pressure in the Rajasthan area, that lowest pressure attracts the monsoon towards India from the Indian Ocean, and it helps us to bring rainfall here in India. If there was no lowest pressure in Rajasthan area, then definitely in that case what would happen, the rainfall here in India would be very low. कहने का मतलब अगर राजस्थान एरिया में अगर लोएस्ट प्रेशर न होता, आपका मई जून जुलाई का टाइम में जो राजस्थान का एरिया जो है वहाँ पर एकदम गर्मी न होता, एकदम जो गर्मी जो होती है उतना गर्मी न होता, तो क्या होता कि वहाँ जो लोएस्ट प्रेशर जो बनता है वो न बन पाता। तो लोएस्ट प्रेशर न बनता तो फिर आपका जो लोएस्ट प्रेशर न बनता, तो उस केसेस में क्या होता कि जो इंडियन ओशन से जो आपका मानसून विंड को ये उतना अट्रैक्ट कर नहीं पाता। कहने का मतलब राजस्थान एरिया में जितना लोएस्ट प्रेशर बनेगा उतना ही ये एक मैग्नेट का तरह काम करेगा इंडियन ओशन से आपका मानसून विंड को अपने तरफ खींचने का। ठीक है, दैट मीन्स प्रेशर का डिफरेंस से ही तो होता है आपका विंड का मूवमेंट। ओके, अब ओशन करेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दैट मीन्स इफ there is the warm ocean current or the hot ocean current, that will bring rainfall. There is a chances of the rainfall. So for example, this is warm ocean current and this is cold ocean current. Okay, when this warm ocean current moves towards the cold ocean current, then this warm ocean current, that means hot water, will मेक द कोल्ड वाटर ऑफ दिस प्लेस ऑल्सो हॉट। कहने का मतलब यहाँ से जब वार्म ओशन करेंट इस तरफ ब्लो कर रहा है, सपोज यहाँ पर कोल्ड ओशन करेंट है, कोल्ड ओशन करेंट का तरफ जब वार्म ओशन करेंट ब्लो करेगा तो वो कोल्ड ओशन करेंट को भी ये क्या कर देगा, वहाँ का वाटर को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। जब गर्म कर देगा तो वहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। दैट मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, जब रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा तो रेनफॉल भी बढ़ेगा ज़्यादा। दैट मीन्स वार्म ओशन करेंट में ज़्यादा चांसेस है कि रेनफॉल लाने का। अब इसी तरह से फिर कोल्ड ओशन करेंट क्या करते, सपोज ये वार्म ओशन करेंट है, ये कोल्ड ओशन करेंट है। अब कोल्ड ओशन करेंट सपोज यहाँ पर आ गया है, ठीक है, वार्म के तरफ, तो ये ठंडा पानी जो है यहाँ का जो गर्म पानी को भी और ठंडा कर देते। जब यहाँ का पानी को और ज़्यादा ठंडा कर देते हैं उस केसेस में क्या होती है, ठंडा वाटर में रेट ऑफ इवापोरेशन कम जाता है। रेट ऑफ इवापोरेशन कम जाता है तो वहाँ पर रेनफॉल भी चांसेस कम होता है। दैट मीन्स जनरली कोल्ड ओशन करेंट एक एरिया को डेजर्ट टाइप का बनाने में भी ये कुछ रोल प्ले करता है। ठीक है, after that another one, the relief feature also has the influence on the climate. How? Relief feature, suppose this is a mountain. Okay, this is the mountain, suppose है, ये तो mountain है मेरा हाथ है, suppose this is the mountain. Okay, suppose this side of the mountain, okay, this side of the mountain, okay, फेस मॉइस्चर बियरिंग विंड। कहने का मतलब ये जो माउंटेन के जो पार्ट है इसका आसपास में वाटर बॉडी है। सपोज मान के चलो यहाँ पर वाटर बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ वाटर बॉडी से इवापोरेशन होकर के ऊपर की तरफ वो जो हवा आपका मॉइस्चर बियरिंग विंड ऊपर की तरफ राइज अप हुआ होगा, किंतु ये माउंटेन हाई ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर जैसे उठा, ऊपर की तरफ तो उठा, ये यहाँ से आपका मॉइस्चर लेकर के ऊपर की तरफ ये हवा उठा। अब ये माउंटेन का हाइट ज़्यादा है तो ऊपर जाने के बाद जितना हाइट बढ़ते जाता है फिर ठंडा होते जाता है ना, हाइट बढ़ने से, तो फिर ये कंडेंस हो गया, जम गया और बारिश ला गया। यहाँ पर जम गया तो अब ये हवा तो जो उसको भारी को और ऊपर लेके नहीं जा पाएगा, छोड़ दिया इसको, यहाँ पर बारिश हो गया। अब ये माउंटेन का चलते मॉइस्चर बियरिंग विंड जो है ज़्यादा हाइट होने के चलते इस तरफ नहीं आ पाए, तो इधर में क्या हो गया, बारिश नहीं हुआ। इसको कहते हैं रेन शैडो एरिया। दैट मीन्स एक ही माउंटेन में भी इस तरफ में बारिश हो रहा है, इस तरफ में सूखा हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ से वाटर बॉडी है, सपोज यहाँ से आपका इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन हो करके जो आपका एयर ऊपर की तरफ राइज हुआ, राइज हो करके जितना ऊपर गया उतना ठंडा होते गया, और ठंडा होते गया तो
वाटर का मॉलिक्यूल जो आपका एयर ने ऊपर लेके गया था वो भी कंडेंस होने लगे, जमने लगे, तो अब वो ज़्यादा उसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा, तो उसको नीचे की तरफ फॉल करना है, तो यहाँ पर फॉल करेगा ही, यहाँ बारिश कराएगा ही। अब इस तरफ ये क्रॉस करके आ नहीं पाया, तो ये जो एरिया जो होते हैं सूखा पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर रिलीफ फीचर जो है, रिलीफ फीचर का भी इम्पोर्टेंट रोल है कि कहाँ बारिश कराना कहीं ना कराना। और यही चीज़ तो है आपका राजस्थान एरिया में भी। राजस्थान, हाँ जरूर राजस्थान मानसून इंडिया में जो बारिश लाने में राजस्थान का बहुत बड़ा रोल है, किंतु राजस्थान खुद को बारिश नहीं मिलता है। बारिश लाने में उसी का रोल है इंडिया में, किंतु खुद को बारिश नहीं मिल पाता है। फिर क्यों? जैसे कहते हैं ना, जो जलती हुई दीप का क्या बोलता है, नीचे में अंधेरा होता है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, हमको उतना नहीं आता हिंदी का, वो जो भी हो। कहने का मतलब राजस्थान जो है आपका वही है, इंडिया में बारिश कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल वही है, फिर भी राजस्थान में ही सूखा पड़ता है। क्यों? उसका रिलीफ फीचर ही ऐसा है। उसका थोड़ा जस्ट नीचे में देखोगे तो अरावली हिल रेंज है, वहाँ पर अरावली रेंज है। तो रेंज मीन्स माउंटेन का चेन को बोलते हैं, बहुत सारा माउंटेन। तो वो माउंटेन रोक देते, उसने ऊपर से तो खींच दिया, लो प्रेशर हुआ तो हाई प्रेशर से विंड ऊपर तरफ आया, राजस्थान की तरफ आया, इंडिया में आया, किंतु राजस्थान में घुसने नहीं दिया। किसने नहीं दिया? अरावली हिल ने नहीं दिया। दैट मीन्स रिलीफ फीचर ऐसा हुआ कि उसको घुसने नहीं दिया, तो बारिश कैसे होगा? तो बारिश तो नहीं हुआ राजस्थान में। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही।